In the number system, we know that in the nature, the first number, when we study the things as mathematics, is known as natural numbers. Natural numbers are denoted by n, right? This is countable number. Countable number means 1, 2, 3, 4, and so on, right? Obviously, we know that. But the completion of number was not there. So we have started with the number 0 also. So it's 0, 1, 2, 3, and every other numbers are coming, right? Then we included integers also, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, and so on, right? Then we consider the rational numbers that must be in the form of p by q, where q is not equal to 0. And p and q belongs to integers, right? So this is known as rational numbers. If we are not able to, right, we can't write the number is in the form of p by q. So this is known as irrational numbers, right? This is the basic, right? This is the basic of the number. Or we can, in one go, we can say first is the natural number. And if we'll cover this with 0, this is whole number, right? Natural is 1, 2, 3, 4, and all, right? Then we'll cover this with negative number, right? This is known as integers. When we'll cover this by p by q form, this is called rational number. And when we are saying other form of number is there, this is q prime called irrational number. When we'll include everything in the number, right? This is known as real number, right? When we include iota, means under root of -1 thing also, this is called complex, right? Imaginary part, imaginary numbers. Then this complete thing is known as complex number. ये पूरा एक वर्किंग होता है किसी नंबर सिस्टम के लिए. प्लीज नोट इट डाउन. Done, everyone? If done, you can write down yes, right? Yeah, this is the class for basic of mathematics, right? This is called basic of mathematics. Huh? Today we are studying basic of mathematics. We don't require any book for this. In class 8, 9, 10, what you have studied, now is a time to refresh the things, and then we have to go ahead with the questions, and we have to go ahead with the new type of learning with these fundamentals and all, right? So this is basic mathematics. I guess everyone know this, like done, everyone? If done, write down yes in chat, then I'll proceed. Okay. Very good. Hope everyone is doing. Now, natural number, integers and all, right? So today is the time we'll go for the irrationality of the numbers, right? Today we are going to study irrationality of the numbers. कोई मेरे को help करेगा?
anyone can help me out for this? What is this irrationality of the number? How could we define this? And if you know anything about this irrationality, like under root of 2, 3 to the power 1 by 5, 7 to the power 1 by 4, right? 6 to the power 1 by 2, these numbers. When not able to write it down in the form of 1, 2, 3, 4, 2 by 3, 5 by 4, and so on, right? Right? ऐसे जब numbers मेरे पास written रहते हैं ना, like if I'm writing 32 to the power 1 by 5, what you'll say, this is irrational or rational? 32 to the power 1 by 5. It's rational. The rational. Very good, beta. Rational. 32 means 2 to the power 5, and this having the power 5, both will be cancelling out, so you are getting only 2. So if something is written, you have to check it out. Okay, maybe possible you are getting some value, and that must be rational only. If the result, the last result is rational, so number is rational, right? Number is rational. Now, see. So this irrationality and rationality we have to see. What is the value of pi? Anyone can help me? Yes, Approximately 3.14. 3.14. 3.14 and 22 by 7. in 22 by 7. Very good. एक और कुछ आया था 180 degree. Yes. Yes, sir. 180 degrees. Yes. Sir, 180 degree. एक थोड़ा सा हम मुझे हेल्प करेंगे, शायद किसी का ये आ रहा है जिसमें इट्स शोइंग क्वेश्चन मार्क। ये सबसे डिफिकल्ट सा टास्क होगा, तो प्लीज रीनेम योरसेल्फ। दिस क्वेश्चन मार्क इज कमिंग नेम की जगह पर, प्लीज रीनेम योरसेल्फ। rename yourself please, right? So ये बहुत सारे different values like you are saying, the first value may be pi is 3.14 or 22 by 7 or 180 degree। मजेदार बात क्या होती है ना कि ये जितनी भी values हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, right? डिग्रीज में तो अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, बाद में उसे देखेंगे। ये जितनी भी ये वैल्यूज हम लोग बात कर रहे हैं ना 3.14 या 22 by 7 और समथिंग लाइक दिस, ये जितने वैल्यूज की बात होती है इनमें से कोई भी वैल्यू पाई की नहीं होती है। पाई इज एन इररेशनल नंबर। पाई जो होता है वो एक इररेशनल नंबर है, राइट? अब इररेशनल नंबर को कभी वो एंड होता ही नहीं है, तो वी कांट राइट दैट। सो वी कांट राइट द नंबर एग्जैक्टली कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, राइट? सो हमारे को केवल और केवल दिमाग में ये रखना है कि नंबर्स आर रैशनल और इररेशनल। इफ नंबर इररेशनल we can go for the approximate value, but 10th तक में ठीक था कि it's 22 by 7 3.14, but अब 11th में और competitive examination में you have to use this pi as pi only. Pi is an irrational number, right? And अंडर रूट के बारे में या क्यूब रूट के बारे में या फोर्थ पावर के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज आएगी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ, यस बेटा? Sir, we have to write this as well. Can we? नहीं, not required. अभी आएगा, जैसे I'll tell you कि from where you have to start. What is the value of under root 16? Right? What is the value of under root 16? 4. Write down in chat. Write down in chat, please.
वेरी गुड। आई प्लस माइनस 16 क्यों कर दिया? थोड़ा ध्यान से। राइट, तो वेरी गुड। काफी लोगों का ये आ चुका है कि दिस इज 4 और प्लस माइनस 4 में जो कंफ्यूजन होता है, तो बहुत कम लोगों को ये है, जो हम लोगों ने लास्ट बात भी की थी। राइट, तो every time the new student will write down this as plus minus 4, but under root is a positive number, and this will give you the answer plus 4 only, not minus 4. राइट, अंडर रूट हो या फोर्थ पावर मैं कर रहा हूं, जैसे 16 to the power 1/4, right? 16 to the power 1/4 is 2 only, not plus minus 4, right? It's 2 only, not plus minus 2, right? Under root 16 is only plus 4, not plus minus 4. Okay everyone, right? ये 10th से 11th में आने पे ये वाली एक गड़बड़ होती है, so like you have to understand this, right? So now we're starting the basics, right? So we are starting with the basic of surds and indices, right? What are the surds? What is the meaning of surds? Anyone help me out for this? What is the meaning of surds? क्या मतलब होता है surds का? You can raise your hand and speak it out, no problem. Sir, converting digits to the powers. Mm-hmm. Third. Sir, I'll Yes. say One by one. Raise your hand, I'll ask. Na? Yes. Now your turn. sir, it is Yeah. an irrational root of an integer. Mm-hmm. Next. For example, Priyanshu. sir, I'll say Hmm. for example, root 2 if I'm not wrong, because it does not exist. Or it is root 3. Okay. Good. Third. Yes. Yes, Priyanshu. A root is a positive real quantity which called surd if its value cannot be exactly determined. If x is a positive integer with an x root, then an x root is a surd. Then nth order when the value of n root x is a transitional, irrational, and hence considered as a surd. So basically, Very good. जो Yes. Tell me. Go ahead. So it's basically we can say that the root is a positive number which value cannot be really determined, like pi value cannot be determined, your root 3 value cannot be determined, so they are called surds. बहुत सारी बातें भूल गए, इतनी चीजें। वेरी गुड, नॉट बैड। और कोई चीज वांट टू एक्सप्लेन? एनीवन? यस एंड प्रियांशु के अलावे और कोई? सर कुछ रह गया क्या डेफिनेशन में? कुछ तो रह गया, मैं वेट कर रहा हूं। There are no end. एनीवन? Sir, यस बेटा। तो रूट एक्स की जो वैल्यू रूट एक्स जो है उसके एक्स में वैल्यू होगी
रैशनल पर रूट x की वैल्यू आएगी irrational. Okay, okay, chal. See this carefully, right? Actual definition when we have to give, you have to be very particular in mathematics. कि mathematics को मैं चलो इस सब आप लोगों के अभी शुरुआत का ये है, बट फिर भी मैं एक ये बोलूं, मैथमेटिक्स को इंग्लिश की बहुत अधिक जरूरत नहीं होनी चाहिए, या हिंदी इंग्लिश या जो भी हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए. मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज अ लैंग्वेज, राइट? एंड उस मैथमेटिक्स के लैंग्वेज के तरीके से इफ आई हैव टू डिफाइन, I'm going to like define this search as, let A be a rational number and N be a positive integer such that nth root of A, net is slow or something, right? थोड़ा सा गड़बड़ है तो वो स्लो हो रहा Screen है is not ना. visible. Are you writing something? Yes, sir, it is not visible, sir. You can see the third Net is indices. slow. Net is slow, so it's coming in a scrolling way. Now to wait a bit, or is irrational. Just I'm giving you the dictate you this. Then a to the power n by n, or a n is called a search of order n. Write down everyone. Let A be the rational number. Let A be the rational number and N be the positive integer, N be the positive integer such that nth root of A is irrational nth root of A is irrational, then A to the power 1 by n, or nth root of A is called search of order n, is called search of order n. Sir, Can you repeat from that a to the power 1 by n? Beta, why not? Once again, I'm starting from the scratch, from the start. Let A be the rational number and n be a positive integer such that nth root of A is irrational, then A to the power 1 by n, or nth root of A is called search of order n. Like if I'm writing numbers as 9 cube root, 15 power 1 by 2, 17 to the power 1 by 5, right? ऐसा कोई भी number if I'm writing, so these numbers (9 to the power 1 by 3, 15 to the power 1 by 2, 17 to the power 1 by 5), these numbers are
known as irrational, right? Irrational भी हैं and these are called surds. These are called surds. तो डेफिनेशन में अगर ध्यान से देखो ये पूरा लिखा हुआ है, कितना प्यारा सा डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, उसको ध्यान से देखो. A be a rational number and n is a positive integer such that a to the power 1 by n और nth root मैंने दे दिया a को. ये नंबर अगर इररेशनल आ रहा है देन दिस विल बी सर्ड्स. लेकिन कंडीशन क्या बोला? a मस्ट बी रैशनल नंबर, n मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर. ये दोनों कंडीशन के बाद ही ओनली यू कैन से कि दिस मस्ट बी इररेशनल नंबर, राइट? तो सर्ड्स के लिए सबसे जरूरी और सबसे पहला स्टेप यही है कि वी मस्ट नो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस सर्ड्स. So hopefully can you give all an you know example? this. Sir, Yes. what have you written after that definition? That example you had given, no? So it wasn't Sir, visible please on the give the screen. examples again. Please raise your hand. I'll answer accordingly, na? Otherwise, it will be difficult for you to understand what I'm saying, right? So what I'm doing, just you have to raise your hand, right? 9 to the power 1 by 3, 15 to the power 1 by 2, 17 to the power 1 by 5. Anything you can write in this form. Yes, you want to ask anything? No, sir, I forgot to lower my hand. Priyam, you want to ask? So what was it? 9 to the power 1 by 3, 15 to the power? What you think? So that What- example. No problem, beta. Anything you can write. What you want to write? Okay, sir. Thank you. 1 by 2, 1 by 3, 1 by 7. Any positive integer 1 upon me, right? Okay, sir. Right. So now, like what we have to do now, what we are going to do, right? It's what is the history of this irrationality? क्या होंगे terminology? What we have to study, right? Definition of this thing, theorems and formulas of all the irrationalities and surds and all, right? And the application part. ये application part हम लोगों को 2-3 classes लेगा, जिसमें obviously like बहुत ही minute level पे we have to go and study, right? So accordingly we have to study the things, right? Now, so it's all start with the word करनी, right? ये जो word करनी है, ये संस्कृत में it's given that it's the word that's called करनी, right? जो सर्ड्स, just we are seeing this now. This सर्ड्स in Sanskrit it is called करनी, and ये कब starting हुई थी, इसके dates हमारे पास like we don't have any idea. ये like 2800 2500 BC के पहले की ये पूरे fundamental start है. But we have to reduce the term to suitable number, right? That's known as करनी, जिसमें सर्ड्स भी आ जाते हैं और irrationality भी आ जाती है. Bhaskara was the mathematician and Brahmagupta was the mathematician. Bhaskara करीब 600-700 AD में he was into that. इन्होंने बहुत सारे फॉर्म्स एंड फॉर्मूलाज दिए थे, इसमें इररेशनलिटी के बारे में इन्होंने बताया था. तो वी वर वेरी रिच इन मैथमेटिक्स, और अभी भी हम लोग बहुत रिच हैं. बट पिछले कुछ सालों से लाइक करीब 6-7 years से वी आर नॉट एबल टू गेट एनी गोल्ड मेडल इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड. आई डोंट नो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, राइट? बट फिर we don't have anyone, right, who can take gold वगैरह आ जाए, इसके लिए हमारे पास वर्किंग ही नहीं है इंडिया में. ब्रह्मगुप्ता का बहुत रिस्पेक्टेबल नाम रहा है पूरी की पूरी वर्किंग में, फॉर सर्ड्स, फॉर इंडाइसेस एंड फॉर irrationality of the number or rationality of the number or quadratic everything, right? इनके बहुत अच्छे वर्किंग रहे हैं. अभी भी बहुत सारे फॉर्मूलाज ब्रह्मगुप्ता के यूज होते हैं, एंड ब्रह्मगुप्ता के लाइक बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग को पढ़ना भी होता है. हाँ,
नेम उनके चेंज होके इंग्लिश नेम पर हम लोगों को देखने होते हैं, राइट। फर्स्ट, इससे पहले की अगर बात करें जो हमारे पास रिटन फॉर्म में है, तो पाइथागोरस को, आई गेस ऑल यू नो पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस फॉर्मूला, राइट। जो पाइथागोरस थ्योरम था, तो पाइथागोरियन जो होते थे, लाइक ये लोग एक इस तरीके से इनकी वर्किंग होती थी ना, कि इनको गॉड के जैसे जितने भी मैथमेटिशियन होते थे, इन लोगों को गॉड के वहां पर लाइक रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो पाइथागोरस थे, इक्लूड तो लाइक उनके 13 प्रिंसिपल, 13 चैप्टर जो है इक्लूड प्रिंसिपल, सीबीएसई 10th में हो गए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर ही था रियल नंबर, याद है ना? फर्स्ट चैप्टर जो रियल नंबर था, रियल नंबर में इट वाज गिवन, राइट, इक्लूड डिवीजन लेमा, और उससे आप लोगों ने वर्किंग की थी, राइट। वो भी 300 बीसी, 350 बीसी के आसपास के जो उनको माना जाता है, राइट। तो पाइथागोरस का अपना जो फॉर्मूला आया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, वो फॉर्मूला पाइथागोरस का ये बिलीव था कि दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली वैलिड फॉर इंटीजर्स ओनली, इंटीजर्स के अलावा कहीं और ये फॉर्मूला वैलिड नहीं हो सकता। पाइथागोरियन फिलॉसफी को मानने वाला ये एक बंदे थे, हिप्पासस, राइट। तो इन्होंने क्या एक चैलेंज किया, इन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन रेज किया। द क्वेश्चन इज कि इफ आई डू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो पाइथागोरस के मैथमेटिक्स के हिसाब से तो 1 के बाद इंटीजर जो आता है वो 2 ही आता है, तो और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 तो हो नहीं सकता, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होना चाहिए, राइट। कितना बेसिक बात को पकड़ने का कितना अच्छा तरीका, ये देखो। उसने बोला कि अगर ये ट्रू है तो मैं रिवर्स जाता हूँ, और रिवर्स जाके मैं ये बोलता हूँ कि लेट आई एम पुटिंग 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू इधर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, कोई ना कोई एक बड़ा नंबर होना चाहिए, बिकॉज मैंने तो 1 प्लस 1 ऐड किया है, 1 हो नहीं सकता, 1 से बड़े इंटीजर्स जो 2 3 4 वही है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर आता है, 3 4 5 के लिए ये वैलिड है, तो 1 1 के साथ में 2 के लिए वैलिड होना चाहिए। तो वहां से ये आइडिया मिला कि नहीं, इंटीजर्स के अलावे भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिसके लिए हम लोग को नोन होनी चाहिए वो नंबर्स। उस एक बिलीव के साथ में जब उनके वर्किंग हुई तो पता चला 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज √2 स्क्वायर के इक्वल होता है, राइट। बट ऑब्वियसली पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, उन पर बिलीव नहीं हुआ तो इन्हीं को हटा दिया गया, राइट। तो नाउ टर्मोलॉजी में फर्स्ट, जैसे मैंने आपको अभी टीच किया सर्ट्स के बारे में, राइट। सर्ट्स के बाद में इंडाइसेस एंड रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, ये हम लोग को देखना है। रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स में हम लोगों को रैशनलाइजेशन में डबल रैशनलाइजेशन एंड ट्रिपल रैशनलाइजेशन भी देखने हैं, एंड 1/4 पावर के रैशनलाइजेशन कैसे होते हैं वो भी देखने हैं, राइट। जो हम लोग √2 √3 के बारे में बात करते हैं, एंड पावर ऑफ द पावर्स की बात करनी है, राइट। ये हमारा पूरा का पूरा वर्किंग है जिस पर हम लोग वर्क करेंगे, राइट। शुरुआत मैंने जो आपकी की वो सर्ट से की। ये कुछ वैल्यूज हैं जो मैंने आपको करीब यहाँ पर देख के रखे कि √36, मेरे ख्याल से अब सभी लोग श्योर होंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √36, इट्स प्लस माइनस 6 और 6। वेरी गुड, वेरी गुड। 100% now we are sure कि this value will be 6 only। जल्दी से ये 6 के 6 हैं, जो भी आप अप्रोक्सीमेट या एक्चुअल वैल्यू लगता है जल्दी से लिख के देखें क्या क्या वैल्यूज आ रही है आपकी। डू इट फास्ट।
value approximately yaad na. Siddharth Paul. Siddharth, please. And unmute yourself, Siddharth. Siddharth Paul. Yes, sir. What is the value? 36? Sir, 6. 6 or plus minus 6? Hello. Hello. 6 or plus minus 6? Yes, sir. Hello, getting my voice? Yes, sir. 6 or plus minus 6? Sir, Yes 6. or what? 6 or plus minus 6? Sir, 6. Not plus minus 6. No? Very Yes, good. sir. Very good. Mute yourself. And last is 2. Okay. Like do you एग्जैक्ट व्यू जो भी हमारे नंबर्स हैं राइट तो इसमें सर्ट्स कौन सा है तो √2 21 to the power 1/3 these are called सर्ट्स right these are called सर्ट्स √36 √144 are not सर्ट्स yes it's okay √2 and 21 to the power 1/3 are surds, but √36 and under root of 144 are not, right? Irrational or surds. Write down again. Do it fast. What do you think? What are these are surds or not? How to use surds, right? This is the one of the best example is x71. You have to find x. Easily you can use a method we know that by Pythagoras theorem, x square is equal to 7 square plus 1 square, right? What we can write this as 50 as 5 root. Right? This is called 5 √2. Solve this. Do it fast.
not approximately. If it's coming root 2, it's complete answer. Not 1.4142, right? वो 10 तक पे अपन लिखते थे. Now not. Yes, done. Look, 2x square is equal to 4, x square is equal to 2. एक बहुत बड़ी गड़बड़. हर्ष क्या लिखा? अंडर रूट -2 कैसे आ गया? Everyone, careful with calculation. अंडर रूट लेने पर ये ख्याल रखना x की वैल्यू दोनों आएगी प्लस एंड माइनस. अब यहां से ये बात कंफ्यूज नहीं होना कि सर अभी बात हुई थी कि x. भवेश म्यूट करो अपने आप को बेटा. रेज योर हैंड प्लीज. भवेश raise your hand please. सी अब यहाँ पर एक बहुत मजेदार क्या हुई कि लास्ट मैंने बोला कि व्हाट इज द वैल्यू. सो दैट वाज प्लस माइनस एंड दोनों अलग अलग ये वर्किंग हो रही थी, राइट? तो अब दोनों के वर्किंग को अगर मैं देखूं क्या पॉसिबिलिटी हो रही है उसे देखता हूं. तो unmute yourself, Pravesh. See, अब क्वेश्चन में अगर यहाँ पर ध्यान दो तो यहाँ और फर्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, राइट? डिफरेंस क्या आ रहा है इसे ध्यान से देखना, राइट? डिफरेंस ये आ रहा है कि फर्स्ट जो हम लोगों ने किया था एंड यहाँ पर सर्च की जब हम लोग बात कर रहे हैं दोनों में एक वर्किंग डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने शुरुआत में ही स्टार्टिंग करा इसमें हम लोगों ने ये बात रखी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 16. तो अंडर रूट 16 की जो वैल्यू थी, राइट, यहाँ पर दो पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ अपने पूरे इंफॉर्मेशन को. एक हमने रखा था x इज इक्वल टू अंडर रूट 16, एक हमने रखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, राइट? In first case, if this is x is equal to 16, right? And the second case, it is x square is equal to 16, right? Look, in this degree or power of x, right? Solution of x, number of solution, what are the solution, ये दोनों चीजें यहाँ पर बात हो रही है, राइट? अभी दिख जाएगा बेटा, घबराओ मत. यस, x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 एक तरफ मैंने लिखा, एक तरफ लिखा x स्क्वायर इज इक्वल टू 16. ये दो हम लोगों ने यहाँ पर वर्किंग रखी, एक x इज इक्वल टू अंडर रूट 16 की, एक x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 16 की. फर्स्ट केस में आई एम आस्किंग कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ x. लाइक पहले आप केवल फर्स्ट वाले की बात कर रहे हो आप लोग, इसका डिग्री क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, राइट? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, डिग्री क्या होंगे, नंबर ऑफ डिग्रीज क्या है, सॉल्यूशन कितने हैं एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन. ये तीन चीजें आपको लिखनी है.
राइट, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात आ रही है। डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, सॉल्यूशन 1 है, एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन तो वो 4, राइट। सेकंड केस में यही बात करूं तो डिग्री 2 है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी 2 होने चाहिए और सॉल्यूशन है +-4। ये दोनों में डिफरेंस है, राइट, ये दोनों में डिफरेंस है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया था, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें था x² = 2। यहाँ आंसर होना चाहिए x = +-2। x की 2 वैल्यूज है जो हमारे लिए पॉसिबल होती। इज इट ओके? कंसेप्चुअली सब लोग स्ट्रांग हो, समझ में आई एग्जैक्टली क्या हुआ? यस यस यस, यू वांट टू आस्क एनीथिंग, प्लीज रेज योर हैंड। Sir, I didn't understand how x square is equal to 2 and x is equal to +-2. So basically, if you get an answer, let's say x square is equal to 9. So when you do the root, it will come as 3 only. But let's say x square 8. X square is equal to 8, and by doing x square is equal to 8, you will get +-√8. So when the answer is in irrational, we will do +-. Wrong concept, beta. Wrong concept. Very wrong concept. I Say don't careful. It's not about ki 9 or 8. It's about ki from where you are getting this. So look into this carefully. In the question, it is given x². So the degree of this is 2. Degree means the power of x. Means the number of solution will be 2. Means you will get 2 solution, right? And x² is equal to 16. You can also write this as x² minus 16 is equal to 0. So this will be x minus 4 into x plus 4 is equal to 0. So you are getting either 4 or -4. That's the reason you are getting 2 answer, +4 or -4. But the under root sign is a radical sign. Radical sign always give you the answer positive. एक मेरे को yes, tell me one thing. What is the value of under root 2? Under root 2 की value क्या होती है? Approximately 1.41. 14142 approximately. Yes, ध्यान देना, sir. this time you are not saying plus minus. This time you are not saying plus minus, right? गड़बड़ कहाँ पर है उसे समझना। हम लोग जब स्टडी करते हैं तो हम लोगों को बचपन से ही एक x² = अगर मेरे पास 16 या कोई वैल्यू है, इसके बाद का स्टेप आता है x = +-√16। बट करते क्या है कि ये स्टेप को लोग बताते नहीं हैं या भूल गए हैं इतने सालों में, तो वो करते क्या है, यहाँ से सीधा लिखते हैं x = +-4। एंड वो दिमाग में ये आता है कि ये तो √16 से आ रही है, बट ये √16 से नहीं आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। +-√16 होता है, इसके बाद का स्टेप ये होता है, इसके बाद का स्टेप ये होता है, राइट? x² = 16 है, x = +-√16 है, तो x की वैल्यू +-4 होगी। इज इट? यस। Sir, so if it is given √16 from before only, it will be 4. But if it's given as x² is equal to 16, it will be +-. Only √4 is given, right? √4 is given. Then it will be Or 2. it is 2 only. But x² = 4 is given. Then it will be +-2. very good, beta. Very good. Okay. Perfect. Thank you. So this is known as surds, right? This is known as surds, right? If I'm giving you few of the numbers, first, second, third, like √76, √5/9, √3/9,
pi under root of 2 plus root 3 under root of plus 6 by 2 ये 5 में से you have to pick rational or search or not a search. Done. Fast, fast, fast. We are dealing with SURDS, SURDS. Done, everyone? Very good. Write it down. See, first one is search, not a search, and search.
लुक द डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन था उसको एक बार फिर से ध्यान से देखो. दिस वाज द डेफिनेशन. टेक योर टाइम. Let a be a rational number and n be a positive integer such that this is a irrational, then a to the power, this is called surds of order n. Important है हमारे पास this a rational number and n positive integers. A rational number and n positive integers. So look into your question, right? Starting with first. This is a rational number. Under root is a under root means power 1 by 2. And this 2 is, we know that this 2 number is positive integer, right? Same with 5 by 9, right? Same with 5 by 9. But look into this, 3 by pi. This is not rational. This is an irrational number. So 100%, this is not our answer. Same with this 2 plus root 3 is an irrational number. We can't take this. But 7 plus 6 by 2, if you'll solve, you'll get a rational number, or rational number having the power 1 by 2. 2 is the integer. So first, second, and fifth must be surds, not the third and the fourth one. Hope you are getting this. Write down yes if you understand in a chat. Very good. Everyone, go fast. Wow, it's flooding. I hope everyone understands this. Very good. Done, everyone. Am I audible? Yeah. Now, the next page I'm again giving you, right? You have to pick the surds on this. Few numbers are coming. All 6. Do it fast. Bhargav, you want to ask anything? Yes, sir. My network connection got lost, so I couldn't complete the definition. Definition? Just a minute, beta na.
This definition, this one, beta, this one. 1 minute. Yes, sir. Because my network connection got that I couldn't see your. Okay, it's okay. Relax. Nah? You can also take the pictures of this, na? I'm showing you the questions. Just a minute. Done. This is the list of the question. Come. Yes, Priyam. So now I'm able to see. I wasn't able to see their screen. Very good. Rishabh, very good, beta. फिर से वही है बेटा, certs or not the certs. Yes, Tariq. Tariq, you want to ask anything? Sir, while replying, giving answers, it's showing you are not in meeting in the chat box. Maybe due to the net connection now, internet connection. Right. Just you can tell me now. What is your answer? The first one. So only if the third, Not a certs. Second one. not a third. Not a certs. Third one, third. not a third. Fourth, not a third. Fifth. Third.
No, Not no, no, no. asserts. No, fifth not assert. Sixth, not assert. Not assert. Like we only have to stick with the basic. Basic was saying that if we have to solve for a to the power 1 by n, a must be rational number, n must be positive integers. कोई ना कोई केस में everywhere you can see every time you'll get कि कुछ ना कुछ fail हो रहे हैं. Every case में we are not getting that. That's the reason this, like, you're not getting certs in any case, right? You can see here. Okay. Okay, everyone, look into this. Very good. Very good. Now this we are going to start with types of certs. Right. First, quadratic. Yes, hers. Sir, I understood everything wrong. Can you please explain the basics again? Not getting your voice. Come again. Can you hear me? Yes. Sir, I'm not understanding, sir. I understood everything wrong. The basics, I didn't understand it. What you are understanding the first one? No, I didn't understand anything. I whatever I understood was wrong. What is the basic definition of certs? What is the basic definition of certs? A to the power 1 by n is called certs only if a is a rational number and n is the positive integer. Can you see in the Yes. in your screen? Yes, sir. Right? Right? 8 to the power 1 by 3. What is this number? 8 to the power 1 by 3? It's 3 is a positive integer and 8 is rational. So it's not a cert if in that case. This from your definition, it must be a search, but you have to see this 8 means this number is 2 to the power 3, and having the power 3 cancel out, this number is only coming as 2. Getting my voice? So hence it is not a cert. Okay, so can you yeah, I can hear you, sir. Sir, can you explain the fourth one in that case? Which one? Fourth one, root 2 plus 1 divided by root 2 minus 1 into raised to 1 by root 6. The fourth one, right? What definition? See the definition. What is the definition? Is a to the power 1 by n. A to the power 1 by n. A must be rational number. Root 2 plus 1 upon root 2 minus 1 is a rational or irrational? Sir, it's irrational. Irrational. Irrational to the power 1 by 6 must be certs or not? Yes, by definition, it should be what? It should be a cert. What is the definition? A to the power 1 by n, or it must be rational? The base must be rational, but base is root 2 plus 1 by root 2 minus 1. The base is irrational. You know what is rational irrational numbers? Yes, sir. So root 2 plus 1 upon root 2 minus 1 is rational or irrational? It is irrational, sir. Root 2 is irrational.
Yes, Okay. root 2 is irrational. Plus 1, root 2 plus 1 is irrational or rational? It is still irrational because root 2 is irrational. Rational. Divided by root 2 minus 1, still it will be irrational. So hence it's a surd. Okay, so this must not be a surd. Okay, go for the fifth one. 5 to the No, power 1. no, no. So it's the first one is it a surd or not a surd? First one is only coming as the number 2. No, it is a surd. What is the definition of surds? Surds, एक मिनट बेटा. The base should be For 1 by n, n n must should be a positive integer and a should be a rational number. And this complete quantity must be coming as irrational. Okay, so if it's irrational, it is a surd if all of the conditions are met. Only the number coming as 2 is what you will say. This is surds or not? It is not because it is rational. Very good. So this is not surd. And from there you are getting only 2. So this must be same with this one. Again, you are getting number 2 only for third question. 32 to the power 1 by 5. Okay. So the fourth one, it is a surd. Fourth, why? Fourth one, surds? Because the base is irrational, but and you cannot find that out. What is the definition? Base is rational or irrational? What is the definition? The base should be rational, and the nth term in this should case, be. base is rational or irrational? So can you repeat? In this case, base is rational or irrational? In this, a is In the irrational, and n is rational. N is a positive integer. If a is irrational, so it must be surds or not? It should not be a surd. No, No, surd. Okay. Acha. So a surd will be defined if the base is rational, nth term is a positive integer, but on 1 by nth on it, if it is irrational, it becomes a surd. Very good, beta. Okay. So once again, I'm giving you question, right? उसके बाद मैं आगे पढ़ूंगा ना. And everyone, this time would be the last time. Like everyone will get the complete right answer. Okay. Shana, you want to ask? Yes, sir. I don't understand why the second one is not a surd. Second is 8 root 5. 8 root 5 to the power 1 by क्या था? What was that? 1 by 3. 1 by 3. Yeah. What is the definition? यही given है. What is the definition? A should be rational and n should be a positive integer. A is a rational or irrational in this case? Oh, okay. Okay, sir. I understood. Okay. Yes, So sir. 3 conditions are there. What 3 conditions are there? First is A must be rational, n must be positive integer, and third, the complete result will be irrational. Everyone write it down. 3 things are required to be asserts for any A to the power 1 by n form. A must be rational, n must be positive integer, and complete result is unsolvable, coming as irrational. Done. Okay, everyone. Okay. First,
only 6. Do it fast. Done, everyone? Yes. Yes, sir. First one, not a third. Wait. Done, everyone? Yes. Very good, very good. Write it down fast. Sir, it's showing you are not in a meeting. बेटा आई एम इन मीटिंग नेट ये दिख बेटा write down in chat. I guess done, everyone, right? First one is obviously start with first one, right? It's not a search. Okay, this number is 2 to the power 4 and this is coming as 2 only. This is the search, right? This is not a search. This is not a search, not a search. Right? Not a search, search.
not asserts, and not asserts, because this is 5 to the power 4 to the power 1 by 4 is coming as 5. How many of you are getting right answer? Write down yes in chat. Yes, Ria. Yes, Ria. Sir, it is showing that you are not in meeting. You want to ask any question? No, sir. Bhargav, you want to ask any question? Yes, sir. I'm not able to message you that my all answers are correct. Very good, beta. Hers, Sir, we have to click on your name again, then it will come, sir. It's okay. Nah? Sir, in chat box, we have to click on your name again, so we can message you. It's okay, beta. Nah? So now you understand, everyone understand this, कि what is search, what is not search. Very good, everyone. I guess सभी के answers सही हैं. Very good, Yes, sir. very good, everyone. Very good, beta. Now, तो ये एक simple सी ये search के लिए, right? And different types of search are there, right? तो different types of search हमारे पास होंगे. And कैसे multiply करें search को, that's very important. हाँ, एक छोटा सा concept we are going to do. राइट ध्यान से हाउ टू मल्टीप्लाई द सर्ट्स if I'm writing 3 plus root 2 and 5 plus root 3, right? So basically what you have to do, you have to multiply one by one. Like first we'll start with this 3 with 5 is 15 plus 3 root 3 plus root 2 into 5 is 5 root 2 plus root 2 into root 3 is root 6. So what you are getting, 15 plus 3 root 3 plus 5 root 2 plus root 6, something like this. लेकिन अगर दोनों सेम नंबर्स हो जाए means if I'm saying ये 3 plus root 2 and 5 plus 2 root 2, मैंने दोनों में root 2 रख लिया, right? Now look this, 3 into 5 15 plus 6 root 2 plus 5 root 2 plus 2 into root 2 into root 2, right? So this will be 15 plus 6 plus 5 root 2 plus 2 root 2 into root 2 is 2, right? 2 into 2 will be 4. 15 plus 4, जल्दी से एक बार करेक्ट कैलकुलेशन पर ध्यान दो. What this is coming as? Is it okay? Okay, everyone.
So now look into this. मैंने जैसे ये नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाहे, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट यू हैव टू सी, राइट. ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऐड सब्ट्रैक्ट में ये हमेशा याद रखना कि क्या दोनों सर्ट्स जो आ रहे हैं, क्या दोनों एक जैसे सर्ट्स हैं या डिफरेंट सर्ट्स हैं, राइट. इफ बोथ द सर्ट्स आर सेम, राइट, दोनों सेम सर्ट्स हैं हमारे पास, दोनों में √2 है, तो डायरेक्टली यू कैन add the numbers, right. लेकिन एक में √2 एक में √3 रहेगा तो we can't add the numbers, right. ऐड करना उस समय हमारे लिए. सो वो आप टाइप्स ऑफ सर्ट्स स्टार्ट करने वाले थे? हाँ करेंगे ना बेटा. और इसके बाद है सर? तो पहले एक मिनट सर, मैं फिर वो कैंसिल कर देता हूँ, मैंने लिख दिया था, राइट. सो ये 16 √2 मेरे पास है, 16 जो √2 मेरे पास है या √23 है. सेम सर्ट्स आर पॉसिबल, देन वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज वी कांट, राइट. Everyone is getting this? Right? ये एकदम याद रखना, एक बेसिक सा कंसेप्ट है, बट बहुत बार गलती हो जाती है. √2 + √3 √5 नहीं होता. a + b का होल स्क्वायर a² + b² नहीं होता, राइट. √a × √b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे √ab, राइट. ये रूल जो है ये तब के लिए ट्रू होगा व्हेन बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव और at least one is positive. Write it down. This first principle, first rule is possible under √a × √b is equal to √ab only if at least one is positive or both are positive, तब का केस. ओके, ये गिवन है √4 × √6, तो डायरेक्टली वी कैन राइट √24. सेम सर्ट्स मीन्स √2 है पहला सर्ट तो दूसरा भी √2 है, √3 है तो दूसरा भी √3 है, √5 है तो √5 है. Yes. So why is it necessary that at least one of them have to be positive? Otherwise गलत हो जाएगा स्टेटमेंट. बेटा मैं दिखाऊं क्या कैसे गलत हो जाता है? Yes sir. You want to see this? Just a minute. For that, first you have to understand the imaginary number, right? Conceptually, if we have to be strong, we have to understand what is this imaginary number. Look into this. What is the value of √(-1)? Anyone? You can help me. What is the value of √(-1)? Yes, Tariq. Go ahead. Tell me. Yes. Priyam. Yes, Priyam. So can you show the previous screen? Just a minute, beta. Now we have to go for this √-1. I'm asking you, what is the value of √-1? So -1. Come again. -1. -1. Okay, not possible. Sir, not -1. possible. Not possible. Yes. Yes, you want to?
something? Under root I, imaginary iota. Wow, 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 wow. Very good, very good. So under root -1 is not a real number. राइट, अंडर रूट -1 जो होता है ना, वो रियल नंबर नहीं होता है, राइट। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी हम लोग को वर्किंग करनी होती है, राइट। अंडर रूट -1 इज नॉट अ रियल नंबर, राइट। अब ये रियल नंबर नहीं है तो है क्या, राइट। ये एक बहुत ही परेशान करने वाली बात रहेगी, एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1। तो फ्रैंकली वी आर नॉट नोइंग दिस वैल्यू, हम लोग को इसकी वैल्यू पता नहीं होती, बट वी हैव टू स्टडी, आगे बढ़ाना था। तो व्हाट वी हैव डन, हमने लिया कि अंडर रूट -1 को हमने आई से डिनोट किया, दैट्स कॉल्ड आयोटा। आयोटा मींस इमेजिनरी, आयोटा ये होता है इमेजिनरी, नॉट रियल, नॉट रियल, राइट। ये इमेजिनरी नंबर होते हैं, राइट। सो अब हमारे साथ में दिक्कत क्या हो गई कि इसकी वैल्यूज तो हमें पता नहीं है, राइट। अब इसकी वैल्यूज नहीं पता है, बट हमें फिर भी वी हैव टू, राइट, हमें फिर भी जितने भी हैं इक्वेशन या गिवन है उनको कहीं ना कहीं हम लोग को सेटिस्फाई भी करने हैं, राइट। अब पूरे इक्वेशन को देखते हुए हमने ये भी कर लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट -1, तो नॉट नोइंग, वो वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, राइट। फिर भी हम लोगों को उसकी वैल्यूज भी लिखनी है और उस पर वर्किंग भी करनी है। तो हमने क्या किया कि अंडर रूट -1 को हमने कहा कि रियल नंबर नहीं है, जो हमारी जिस तरह की लाइफ होती है उस लाइफ में हमें ये नोन नंबर नहीं पता एग्जैक्टली व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। तो हम लोगों ने रखा कि ओके इसका नाम हम लोग दे देते हैं आयोटा, जिसका मतलब होता है इमेजिनरी, राइट, नॉट रियल। और अगर मैं आई को स्क्वायर कर दूं तो मुझे दिखाई दे रहा है एक बड़ा प्यारा सा नंबर, दैट्स -1, राइट। तो हम लोगों ने ये रखा कि ओके वी आर नॉट नोइंग द वैल्यू ऑफ आई, बट आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है और आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, राइट। Yes, Shana, you want to ask anything? So what if the minus is outside the root? तो माइनस हो जाएगा, 2 के आगे माइनस साइन होता है तो what you have to write? -2. Yeah, so then in the first rule, so suppose if it's minus root b, a in root a into minus root b, so then it's possible, right? Just I have to complete na. Wait na. Okay. So under root a into under root b is equal to under root of ab, right? ये था मेरे पास। मैं क्या करता हूँ इसमें कि a is equal to मैंने -2 ले लिया, b को भी मैंने -2 ले लिया, right? Both the values I am writing as -3 ले लेता हूँ एक, right? -2 and -3, देखना कितना अच्छा मैजिक आ जाएगा। So can you repeat what you were saying? My net has a big problem today. Arden, come again. So nothing, sir. -2 and -3. So this will be under root of -2 under root -3 is equal to root of -2 and -3, right? We know that under root of minus we can write this as -1 into 2, we can write this as -1 into 3, write this as under root of 6, right? This is under root of -1 into under root of 2, root of -1 under root of 3 is equal to under root of 6. Under root -1 is I, right? Under root of -1 is I, root 2 into root 3 is equal to root 6. So this will be I into I is I square, root 2 into root 3 is equal to root 6, or we can write minus of under root 2 into 3, 6 is equal to under root 6. And तो कितना absurd सा स्टेटमेंट आपके पास आ गया ये पूरी वर्किंग में, राइट?
कितने एब्सर्ड से स्टेटमेंट आ जाएंगे ये ध्यान से देखना पूरी वर्किंग में, राइट। वी कैन स्टार्ट विथ नेगेटिव लिया, जल्दी से एक बार कोशिश करो तो सॉल्व करके। व्हाट इज दिस कमिंग, मैंने दोनों तरफ लिया और आई के हेल्प के आप लोग कोशिश करो तो क्या आता है, देखो तो। ध्यान दो, ये देखो सॉल्यूशन, देखो ये सामने आपके। इज -2, b इज -3, राइट। तो दोनों वैल्यूज हमने रख दिया यहाँ पे ना, जो भी a b वाले पे दोनों हमने रख दिए। तो -2 we can write -1 into 2, -3 we can write -1 into 3, and this is √6, right। दोनों को अलग अलग किया, you can see this is under root -1, under root -1, √2, √3, √6। So this under root -1 is I, जो हमने अभी Sorry, प्री में just देखा। wrote the longer Root form. -1 is again I, so this is √2 into √3 is √6, and we know that √2 into √3 is 6 and I square is -1. So what is this coming? Minus √6 is equal to plus √6, right? Minus √6 is equal to plus √6. Sir, that was a longer way, no? It's a wrong thing is coming. It's not longer or simplest way. I'm showing that the under root a into under root b is equal to under root b is not always true, right? Yeah. That's the reason you are getting the last answer you are getting is wrong. When you are getting wrong, when both the numbers are negative. That's the reason I said ki under root a into under root b is equal to under root ab. This formula is true when a and b both are positive or at least one positive. A and b both are positive or at least one positive. What I have shown ना, यही अभी दिखाया था ना मैंने, ये right? Okay, everyone, write down fast. Right? Simplification of surds, right? If it is given root 12, right? We know that root 12, we can write this as root 4 into root 3. And root 4 is completely will get as 2 and root 3 is root 3 only. Okay, everyone. This type of simplification is very much required, right? Same way you have to simplify root 45, root 32, right? And root 72. Do it fast.
Very good, Parth. Siraj, very good. Prachi, very good. Mosmi, very good. Ghus, Risav, everyone, very good, very good. Chana, very good. हाँ, not 2 root 8. Root 8 में से भी एक फैक्टर निकल के आएगा. Right? How many of you got completely right? Write down yes. Right? This is the complete answer. कहीं भी बीच में रुका होगा तो you have to complete and you have to come to this point only. Right? Go for this. Fast. This time faster than the last time. Very good, everyone. Very good. Go fast.
Very good. Go ahead. Match your answer. How many of you got everything right? Write down yes. Ah, very good, very good. I guess everyone. Everyone. Very good. All correct? Anyone want to ask anything? Please go ahead. Anyone want to ask anything? It's okay. Right? Simplified. Yes, Tariq. सर Yes. -1 का रूट आयोटा होता है ना, तो सर इट इज ओनली फॉर -1 और -2 का रूट भी आयोटा होता है। -3 -2 में अंडर रूट करूंगा तो √2 पहले बाहर निकालूंगा, देन इट विल गेट -1 का रूट, तो √2 into I. हाँ, ओके। Do it fast. Simplify this. Write down the answer in chat. Ria, 5 √7 minus √7. Take √7 common and 5 minus 1 is 4. Okay. Answer is 4 √7. Go ahead for this one. 4 √7. Go ahead for this one. Very good, Siddharth, Khus, very good. Very good, Ankit. Shanya, very good. Aditya, very good. √5 only. Tariq, under √45. You can write down 9 into 5. This is 3 under root of 5 minus 2 under root of 5. Right? √5 is common. 3 minus 2 is √5 only. 1 into √5 or √5. Right? Application. Do it fast.
Pythagoras in 3D. Find the length of the space diagonal AG. You have to understand the figure. That's very important. Carefully. See, we have to find, right, in the figure you can see, right, this is given as 10, 10, and this diagonal we have to find, and GH is given as 10, then we have to find this. So first we have to find AH, and AH will be, right, AH will be AH square is equal to AD square plus DH square, and both are given as 10. So 10 square plus 10 square is 200, right? Very good. AH is 10 root 2, or H square is 200 only. But I have to use this AH and HG for AG, right? So AG square is equal to, again, using the Pythagoras, H square plus HG square, right? 200 plus 100, 300 square, right? AG, Siraj, careful. Right? Okay, go for this. Simplify. Chana, you want to ask anything? Yes? So can you go back 1 second? Yes, sir. Why not? Where? Is it okay now? In any cube room,
right? We know that the diagonal square is equal to L square plus B square plus H square. 10th में फॉर्मूला किया था हमने. Remember that? L square plus B square plus H square. Thus the formula is coming here only. 100 square plus 100 square plus 100 square, 300 under root of 300. This coming as 10 root 3. Okay, okay. So the last question we are doing, and everyone write down as fast as possible. Course check करना, check your calculation. Very good, Tariq. Ankit, very good. Very good, Masmi. Arsita, very good. Priya, Siraj, very good. Sanya, very good. Rishabh. Very good, everyone. Very good. So these are the simple things, right? Next class, what we are going to do, we'll start, okay? We'll start types of certs, right? अपने 8, 9, 10 की बुक्स एक बार जरूर देख लेना, जहां भी सर्ट्स गिवन हो, रैशनलाइजेशन एंड ऑल, आपको आसान पड़ेगा. एंड यही सब चीजें हैं जो एक्सटेंड होते जाएगी क्वेश्चंस पे. बट फर्स्ट वी हैव टू गो विद द बेसिक. मैं एकदम ये एज्यूम करके ही नहीं चलता हूं कि किसी भी स्टूडेंट ने पहले कुछ किया है नहीं किया है. जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके इंजीनियरिंग मेडिकल में आगे यूज होने हैं, हर चीज मेरे को पढ़ाना है, राइट? केवल आपका एक ही वर्किंग है, आपको साथ साथ में क्वेश्चंस करते जाने हैं.